So this is the question number 26 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, a snippet of code has been given to you and it has been asked out of the given four option which option gives you the correct output of the given code. If you take a look at this code, it seems a very easy code because it contains only two lines, out of which first line seems to be a single element tuple. On the other hand, second line seems to be using repetition in tuple. If you recall, लिस्ट के अंदर हमने आपको बताया था कि लिस्ट वन अगर हमारे सिंगल एलिमेंट है तो इट रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो सिंगल एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस. बट दैट इज नॉट द केस इन द टपल. टपल के केस में ऐसा नहीं होता. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ टपल, how single element is represented, then we will come back to this question and then we'll try to solve this one. As you recall, as we have already told you, tuple क्या है? आपका एक सीक्वेंस डाटा टाइप है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके enclosed अंडर राउंड ब्रैकेट्स और each element is separated by comma like this. Okay, but when it comes to the single element tuple is not like the single element list. अगर मैं बात करूं सिंगल एलिमेंट टपल की, ओके, तो सिंगल एलिमेंट लिस्ट की तरह नहीं होता. लिस्ट में क्या होता है? सिंगल एलिमेंट टपल लाइक दिस. बट इन द केस ऑफ सिंगल एलिमेंट टपल इट शुड बी फॉलोड बाय कॉमा. सिंगल एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय कॉमा. अदरवाइज क्या होगा? जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो क्या ट्रीट करेगा? इज एज ए डिफरेंट डाटा टाइप. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, इफ यू सी दिस वन इज क्या है? आपका सिंगल एलिमेंट डाटा टाइप. ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज सीम्स टू बी ए सिंगल एलिमेंट टपल. Okay, but if you take a look at this one, this is not a single element tuple. It will be treated as another data type, which is integer in this case. Okay, now coming back to our question, if you see the first line, the first line is not a tuple. This is not a tuple. It is a single data type, which is integer in this case. Since it is an integer, this is not a repetition. ये repetition operation नहीं है आपका. This is your normal multiplication, which gives us 100 into 2, which is 200. Therefore, option number C is correct in this particular case. ध्यान रखिएगा, tuple single element always represented using a comma followed by that particular element. Okay, so for this option number C is correct. Well, reason is because T is not a single element tuple, it is an integer number. If you wish, you can run this code on your IDE, and in addition to that, you can always try with the type of T. T का type क्या आएगा आपका? Basically integer in this case. I hope this question gives you a little bit idea about the single element tuple in Python. If you have any doubt regarding the single element tuple in Python, feel free to ask in the comment box.